London opens, price starts to breathe. New York follows with heat underneath. Reading structure, steady and clean. ICT flow in every screen. Signal shift, momentum grows. Algorithm shows where it goes. VTrades, watch the charts ignite. Sniper entries hidden right. Funded profits rising bright. Building strength in every night. Follow flow, ignore the noise. Structured moves, intentional choice. Let the chart reveal the way. VTrades growing day by day. VTrades growing day by day. Institutional rhythm moves slow. Liquidity tells where price will go. Building accounts with patient plays. Consistency defines our day. Signal shift, momentum grows. Algorithm shows where it goes. Watch the charts ignite. Sniper entries hitting right. Funded profits rising bright. Building strength in every night. Follow flow, ignore the noise. Structured moves, intentional choice. Let the chart reveal the way. VTrades growing day by day. Trades growing day by day. Precise. Welcome to VTrades. हेलो हेलो, क्या हाल है भाइयों सबके। होप एवरीवन इज डूइंग गुड। So just like usual, we are watching a NQNES, and I think I've just missed my entry here. Was trying to short this inversion fair value gap. I think it is about to start the regular trading hour, like the opening range cap model move, where it just fills the regular trading hour closing settlement price difference from yesterday's PM session. So we are trading on Tradeify valuations, 525K. We are up $400 on each of them. Still need to make another $1,100 to pass those. So no news Wednesday.
है आज, तो इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जस्ट लाइक नॉर्मल ट्रेडिंग। और हम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन शॉर्टिंग, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत एक स्पेसिफिक मॉडल है जो कि हम पे आउट होना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वरना चीज़ें जो हैं वो बुलिश ही हैं। लग रहा मिस हो गया मूव। ओके, गॉट फिल्ड देयर। लेट्स सी if it wants to respect our stop or not. Looks pretty bullish, to be honest. Alright, क्लोज इतना अच्छा नहीं है पिछला। लाइक ये वाली जो सिबी है, इसमें भी काफ़ी स्ट्रांगली क्लोज हुआ है। Even ES did the same. Let's see. I'll take one off around this area if it allows me. तो देखते हैं मूव होता है हमारी डायरेक्शन में या नहीं। 30,057.75 is the regular trading hour closing settlement price from yesterday. That is what I'm talking about. तो एटलीस्ट ये लो लेना चाहिए इसको अभी। एंड द रीज़न इज़ कि ES ने भी yesterday's high sweep कर लिए around 8:30, and now they should use 850 to 910 macro to provide some discount, even if they want to continue higher later on. हमारे पास मिडनाइट ओपन प्राइस भी काफ़ी डिस्काउंट में है यहाँ से। ये हमारी RTH क्लोजिंग तो देखें काफ़ी प्रीमियम में है अभी हम। एक्सपेक्टिंग इट टू ड्रॉप, लेट्स सी।
न्यू डे ओपनिंग गैप भी मार्क ही कर देते हैं, आज का मसला नहीं है। हालांकि ये सब मेरे पास एनोटेशन चार्ट पे हुआ है दूसरी स्क्रीन पे, लेकिन जस्ट टू यू नो मेक श्योर हमारे पास यहाँ पे भी ये प्राइस लेवल्स हों सामने। आप लोग कैसे देख रहे हो मार्केट को? हाउ आर यू गाइस रीडिंग? ट्रेड कर रहे हो या आज ऑफ साइड हो बिकॉज नो न्यूज़ है, वेंसडे है? कल हमारे पास जीडीपी है 8:30 पे, तो दैट विल बी समथिंग गुड टू लुक एट। क्या हाल है अहमद भाई, क्या चल रहा है? Okay, ES respected this FCB bearishly, and this small BC is being inverted bearishly. This is what I'm talking about. मैं सोच रहा हूँ इस पूरी रेंज के 50% पे एक उतार लूँ अपना, क्योंकि चीज़ें काफ़ी बुलिश लग रही हैं। एंड देन जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, आई कैन राइट दैट। ES पे एक मिस हुआ है। इस कैंडल क्लोज के बाद 6 मिनट्स दूर हैं हम मैक्रो से। अच्छा, इस ट्रेड पे क्योंकि ये काफ़ी एक्सप्लोसिव सी कैंडल थी, तो मेरे फॉलोअर्स पे मुझे काफ़ी अच्छा फिल मिला है। लाइक देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ $27 एट द मोमेंट इन PNL ऑन फॉलोअर्स, मतलब फॉलोअर्स ज़्यादा हैं प्रॉफिट में, और जो लीडर अकाउंट है दैट इज़ लैगिंग अ लिटिल बिट बिहाइंड।
तो मैं अप्रोच नहीं कर पाया ट्रेड सिंकर वालों को कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं एंड व्हाट वी कैन डू टू अवॉइड दीज थिंग्स, बट दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड, आई वुड से। तो ईएस पे काफ़ी डिफरेंट प्राइस एक्शन देखने को मिला है हमें। इस ड्रॉप ने ये सारे लोज ले लिए, जबकि एनक्यू पे कोई सा भी लो नहीं लिया उसमें से। एनक्यू काफ़ी बुलिश लग रही है अगर हम देखें, और कल भी ऐसा ही था। कल ईएस जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन एनक्यू जो है उसने काफ़ी स्ट्रांगली ट्रीट किया है। तो देखते हैं कि अब ये अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी सी तोड़ने को तैयार है या नहीं। अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ से प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना चाहिए 50% ऑफ दिस रेंज, क्योंकि हमारे पास ये सारी बुलिश एसएमटी होगी। तो फिर अगर हम इसकी ये रेंज पढ़ने की कोशिश करें तो इट इज़ ऑलरेडी ऑन 50%। 3 मिनट दूर है भाइयों मैक्रो से। 850 to 910 मैक्रो। Alright, 2 minutes away from macro now. क्या लगता है भाइयों, will it continue dropping lower? Let's check different time frames. 5 मिनट ये बिसी है हमारे पास, यहाँ पे भी बिसी है, ठीक है ना। 15 मिनट we are in busy. Our partial is in busy as well. Now the question is, should we start scaling out of this position or should we stick with it? Reducing my risk, that's for sure. All right, looks like it wants to continue lower. That is very nice. Next minute is macro.
might offer a premium initially by trading inside these inefficiencies. Let's see. Good close on NQ there. Traded inside this inefficiency but couldn't hold it and got slapped. ES seems to be a bit stronger as compared to NQ here. Going break even now. Holding it for too long, to be honest. I am thinking of taking this partial here. क्या बोलते हो भाइयों? Yes, I will take this off here. Thank you very much. Right, now let's see if it wants to continue to our targets. So booked around 120 there. Good way to start the session.
4 minutes away from 9 o'clock. I would like to see this fair value gap inverted this time, bearishly. सो रिपीटिंग माई सेल्फ फ्रॉम येस्टरडे, आजकल जो सिर्फ एक ही गोल है मेरा, वो है रिस्क मैनेज करना सही तरीके से। जो अकाउंट बैलेंस है, जो ड्रॉ डाउन है, उसको सही तरीके से यूज़ करना। और क्योंकि हम लोग 25 के अकाउंट्स यूज़ करते हैं, तो उस पर सिर्फ $1000 का वो होता है, ड्रॉ डाउन होता है। तो उस पर हम 10% ऑफ द ड्रॉ डाउन ईच ट्रेड को देते हैं, विच इज़ अ लॉट एज वेल। लेकिन उससे भी स्टिक करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, एंड आई कीप एडिंग। तो या करंटली मैं इस चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप इस इंडस्ट्री में कुछ सिग्निफिकेंट नहीं कर पाओगे। दिस इज़ मी आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है। सो जब तक आप लोग वो नहीं करोगे, और मैं भी, तब तक चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट नहीं लगेंगी। तो बेसिकली जो नेगेटिव चीज़ें हैं ट्रेडिंग में, जैसे कि अपने टाइम में ट्रेड ना करना, जैसे एशियन सेशन, लंदन सेशन में खोल के बैठ जाना, ये चीज़ें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करना, इन सारी चीज़ों को नेगेट करना चाह रहा हूँ मैं अपनी ट्रेडिंग से, बिकॉज दीज थिंग्स हैव बीन होल्डिंग मी बैक नाउ फॉर रियली लॉन्ग टाइम। Alright, good drop. Looks like wants to continue lower. तो वो मैंने अपने पिछले टारगेट से 27 हैंडल्स ऊपर लिया है, विच इज़ अराउंड $50 ऑन वन कॉन्ट्रैक्ट, सो नॉट बिग ऑफ अ डील। I believe it should not spend much time here, क्योंकि ये previously use हो चुकी है to run it higher. This time they should just drop it lower, फिर इसका एक retest करना चाहिए, bodies को half point से नीचे रहना चाहिए, and then it should continue dropping lower at least to these lows. दस सेकेंड है 9 बजने में। राइट, 9 बज गए हैं। न्यू अर्ली कैंडल, looks like it wants to retrace inside these inefficiencies, which is really good for us. On ES, it has something similar as well, but a bit different. Like it can continue lower, take this low as well, but it is currently in busy already. And as we know that NQ काफी bullish act कर रही है as compared to ES, it can easily continue from here, क्योंकि ES is ready to continue. तो देखते हैं, I'll still hold on to this trade until the open. And एक partial हम book कर चुके हैं, which is given us more than 1 hour. And the other partial, उधर हम कुछ risk नहीं कर रहे, we are risk free.
So nothing to stress about. We'll just have to wait here patiently to see if it wants to work out for us or not. 29 minutes हैं हमारे पास ओपन में, ओपनिंग बेल में. And trading is all about, you know, waiting, guys. अगर यहाँ पे कोई नया बंदा है and he's like, हम लोग कुछ हड़ाहुड़ी नहीं कर रहे, एक्साइटमेंट नहीं है, बिल्कुल बोरिंग सी चीज़ रिपीटेडली हम लोग वो करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. तो दिस इज़ व्हाट यू नो प्रोफेशनल ट्रेडिंग लुक्स लाइक. अगर आप एक्साइटेड हो अभी तक अपनी ट्रेडिंग को लेके, देन नो वंडर व्हाई यू आर स्टिल अनप्रॉफिटेबल, क्योंकि सारा सीन जो है वो इमोशनल कंट्रोल का है. ES is taking a serious slap. That is really nice. Right, NQ dipped inside that fair value gap again, but closed above it. So let's see what is it trying to show us from this. ये एक छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस है और ES पे भी है हमारे पास यहाँ पे. तो इसको क्या पता ये बुलिशली यहाँ से यूज करें एटलीस्ट टू ट्रेड इनसाइड दीज इनएफिशिएंसीज. लेट्स सी. तो ये ओपनिंग रेंज कैप मॉडल के लिए है क्या सीन सारा के यू नीड टू हैव दिस 4:14 PM क्लोजिंग सेटलमेंट प्राइस फ्रॉम यस्टरडे. ठीक है, और फिर आपको 8:30 बजे आके बैठ जाना है अपने चार्ट्स पे. 8:30 बजे का जो पुश होता है उससे आपको देखना है कि कोई अपोजिंग साइड लिक्विडिटी स्वीप हो, जैसे यहाँ पे ES पे यस्टरडेज हाई थे. ठीक है, वंस वो स्वीप हुए तो फिर अपोजिंग डायरेक्शन में आपके पास RTH क्लोजिंग सेटलमेंट होनी चाहिए. 8:50 से एक्चुअल मूव स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. एंड मकसद क्या है कि अराउंड 9:30 ओपन एंड इन द फर्स्ट आवर ऑफ ओपनिंग बेल इसको ये RTH क्लोजिंग फिल करनी है एटलीस्ट टू कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट ऑफ दैट गैप ईदर और ES और ईदर ऑन बोथ ऑफ देम. तो ये मॉडल काफ़ी प्ले आउट होता है, बैक टेस्ट करके देखो. मोस्टली 70-80% ये आपके चार्ट्स पे आपको दिखेगा वीकली बेसिस पे. तो एक मॉडल हमारे पास ये है, फिर दूसरा मॉडल है हमारे पास सिल्वर बुलेट, जिसपे हम 10 बजे का वेट करते हैं. उसमें कोई अपोजिंग साइड लिक्विडिटी स्वीप हो इनिशियली 10 बजे, अगर कोई न्यूज़ ड्राइवर है, एंड देन मार्केट कंटिन्यूज ऑन दी अदर साइड. तीसरा जो है वो हमारे पास लंच प्रोफाइल है. लंच प्रोफाइल जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आई एम टू टायर्ड वरना हम खेल सकते थे. उसमें क्या होता है कि वेन एवर दी मॉर्निंग रेंज and the first hour of trading basically has rallied into one direction, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ही डायरेक्शन में ट्रेड की थी. तो 10:50 से आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर सकते हो सम मूव इनटू एटलीस्ट 50% ऑफ दिस होल रेंज. ठीक है, इसने 50% से भी ज़्यादा दिया है. यहाँ पे आप देखो इट completed that move by 11:55 and then continued on higher. तो ये 3 मॉडल हैं जो कि मैं प्ले आउट करूँगा यहाँ पे और जो मैं बैक टेस्ट करता हूँ. NQ is back in this inefficiency.
टेकिंग दिस लो, जबकि ईएस ने ये लो नहीं लिया। लेट्स सी। तो अभी तक हमारा पिछला पार्शियल जो है, मतलब पिछला टारगेट ऑफ द पार्शियल डिलीवर नहीं हुआ होता, लेकिन अबाउट टू बी डिलीवर्ड लुक्स लाइक। इसको ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए इसमें। अब जैसे कि मैंने बोला था, अब जो नेक्स्ट कैंडल है, मतलब इसको बंद होना चाहिए सबसे पहले इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे, और फिर जो नेक्स्ट कैंडल है उसको बॉडीज जो हैं वो इसके हाफ पॉइंट से नीचे ही रखनी चाहिए, एटलीस्ट स्वीपिंग दीज इक्वल लोज। राइट, तो पिछला हमारा जो टारगेट था वो डिलीवर हो जाता, लेकिन मसला नहीं है, हमने पहले बुक कर लिया, $50 कम बुक किए, बट इट ऑफर्ड अस mental peace and emotional stability to stick through this trade, which is exceptionally important as well. तो वो वाले लोज ले लिए हैं इसने। Let's see if it wants to continue or not. बीस मिनट दूर हैं हम ओपनिंग बेल से। Nvidia looks like wants to trade lower. So does Amazon, Apple, and most of these stocks. So I'll just stick with this. ES is looking much weaker as we saw in the hourly chart.
All right, up 500 ticks here. All right, ESS swept this low now. Looks like it wants to retrace now. पंद्रह मिनट दूर हैं हम ओपनिंग बेल से अब। दूसरे टाइम फ्रेम्स चेक करते हैं। ये 5 मिनट है, 5 मिनट में ये हमारे पास से भी बनी हुई है, ये भी से भी बनी हुई है हमारे पास। हमारा स्टॉप ब्रेक इवन है और हम इस लो के नीचे ले रहे हैं अपना टर्मिनस। हमारे पास रेगुलर ट्रेडिंग क्लोजिंग प्राइस जो है वो मज़ीद 120 पॉइंट्स नीचे है अपने टर्मिनस से भी। तो एज सच कुछ ज़्यादा टारगेट नहीं कर रहे हैं हम। लेट्स सी इफ इट वांट्स टू कंटिन्यू और नॉट। ये 15 मिनट है, 15 मिनट की विक्स के अंदर चले जाते हैं, मसला नहीं है। ठीक है ना जी, अब देखते हैं। इट शुड रिस्पेक्ट दिस इनएफिशिएंसी बेरिशली। तो मैं यहाँ पे प्रीमियम सेंसिटिविटी देख रहा हूँ आना वंस प्राइस हैज गॉट इनसाइड दैट। अच्छा जी, 12 मिनट दूर हैं इस क्लोज के बाद हम ओपनिंग बेल से। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, स्पेशली ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम में। अगर आप NQ और ES वगैरह जैसे मार्केट्स खेल लो, जैसे मोस्ट ऑफ द मार्केट्स में, टू बी ऑनेस्ट। Right, ES making lower low there.
और 11 मिनट दूर हैं अब हम। PS made lower low there, NQ ने नहीं बनाया है अभी तक। दस मिनट दूर हैं अब हम। अब इजीली ये ना वापस जा सकता है इसमें, तो मैं एटलीस्ट ये प्रोटेक्ट करूँगा। बुकिंग मोर देन द प्रीवियस वन, तो मसला नहीं है अगर इधर से हम स्टॉप आउट भी होते हैं तो। Yes is about to get inside the midnight open range. Let's look at the hourly candle again. Yeah, hitting that order block now. So I'm going to book it here if it gets me. Looks like it wants to retrace now. Still wait. छः मिनट दूर हैं अब हम।
925 की जो कैंडल है वो इसमें वो कर सकती है, विक कर सकती है, and then the next 5 minutes should continue lower if we are on side. If not, then it can continue higher in these levels. Let's see. $9.25 5 minute रह गए. Using this small BC on NQ. ES is rallying higher while NQ took a little hit. Four minutes away from open. I want to get out of this position by open. Alright, makes a low there. And then feel less. Yeah, might run for a stop now. All right, thank you very much. Around 4-hour trade here. Shorted two contracts from 3334.50, took one partial at 3267.75 and the other one 3195. So pretty happy with this result and thinking of closing off my day here. Yeah, let's see. We'll stick with the until the opening bell. This was our opening range gap model, which usually plays out 70 to 80% of the time. Really beautiful price action, to be honest. Really happy with this trade, and that is why I want to close my session, or at least not place another trade, because I don't want to get this messy, you see, so clean. So yeah, we are just 1 minute away from opening bell now. What do you guys think about the price action we are going to be getting today?
Let's mark out our opening range gap. 30,057.75. TradingView has been lagging a lot these days. I don't know why. Five 7.75. We will reverse it. We will divide it into eights. All right, we get the opening bell here. All right, it should drop straight to the consequent encroachment, either on ES or NQ. I think on ES it has done that already. 536 and opening came at 42, so that will make it 39, the consequent encroachment, which has been delivered 39.5. Looks like NQ wants to dig much deeper and see how it is coinciding, like the top of the midnight open range and the consequent encroachment. All right, so looks like ES wants to show some strength from here, NQ as well. Let's see. This is how the daily chart looks like. This is how the hourly chart is looking like on ES. This is how the 4-hourly is looking like. I'm more inclined towards being bearish, to be honest.
and for it to continue much lower. But we are already done for our targets for the day, I would say. इनके को at least 930 open price का retest देना चाहिए even if it wants to continue lower. Yes, seems like wants to trade much higher than that. Right, NQ making lower low there, testing the consequent encroachment of the opening range gap. That is our terminus for the opening range gap model. Yes, it's still finding. Now I think that it can continue higher for the rest of opening range at least. Got slapped again. Looks like wants to trade inside these inefficiencies on daily chart. Filled it completely there. Low coming at 30,054. Nvidia got slapped badly as well.
This is our first presented fair value gap. Nothing on ES yet. NQ testing the fair value gap and acting bearish. 10 minutes left in macro. Like for the macro to start 9:50 to 10:10. Looks like about to make lower low for the day on NQ and flip the daily candle. Alright, NQ about to make lower low for the day. NQ making lower low there. Now retesting the low of the opening range gap. Small fair value gap on ES, I would say. Look at the daily candle. It was trading around here when we shorted it. Very clean price action today. Really clean. Really like this.
Another fair value gap. This will be read as first presented on ES, I believe. Should be continued on using it as premium array. Looks like ES wants to use it bullishly for now. And Q continues on making lower lows. Yeah, I think that should be the terminus for the day, or at least that high. Right, ES did not make lower low there. Macro starts.
Okay, seems to be pushing higher. Maybe we can look for something like this from here. Ah, not interested. That would have been our fill. I'm up $800 on these evaluations, so need to make another 700 to pass these.
Remember, our stop was this low. Looks pretty tempting now to long it, but I won't. This is what I need to practice, staying offside even though my narrative play out. So if I would have shorted from long from here, I'd take a quick scalp on first presented fair value gap. Just at the midpoint of it, or maybe consequent encroachment of the opening range gap. Yeah, maybe somewhere these areas. This long seemed to be playing out as well. Once it has hit my presumed target, I'll just call it a day. I was stopping myself out around this price level, 29967.5. Was taking my target at 30,070. Entry being somewhere around 30,020. 10 o'clock.
ES back at 9:30 open price. This is about to give us our targets as well. Right, got our target there. Thank you very much. I'll call it a day here. Very nice day. Just one trade, making almost most of the daily target profit. And yeah, it was a 4-hour trade. Did not want to learn anything after that, but could have banged on this long as well for another 120 or $150. But it's okay. We'll be back tomorrow at 8:30 a.m. Eastern Standard Time. Thank you for being here. If you trade NQ or ES using ICT concepts, I'll be trading here every day at 8:30 a.m. Eastern Standard Time. If you learned anything from this, please give it a like and subscribe to the channel. Yeah, see you guys tomorrow. Until then, take care, stay safe, and yeah, good trading. Cheers, bye.